Hello, I am Ravi with my YouTube channel Ravi Sir Biology, and I have already started the sessions for 10th standard also. The first chapter was started, and the first chapter name is life processes. In the life processes we have studied nutrition. Sorry, we studied about life processes first, then we started nutrition, mode of nutrition, and all the types of nutrition we have studied so far. And today we are going to start the process of photosynthesis. Photosynthesis. We have to study photosynthesis, and definitely some practical based questions, some reasoning based questions will be there in board examination from this photosynthesis. So let us see photosynthesis. Sometimes in higher classes books it has mentioned PS, means photosynthesis, and we are going to study about photosynthesis only. So what is photosynthesis? First we have to know. Photosynthesis is a process by which green plants make their food in presence of sunlight and chlorophyll by using two raw materials, carbon dioxide and water. So let us see first of all the conditions required for photosynthesis, and then we will proceed to the next step. So what are the conditions for photosynthesis? Conditions for, if I am writing PS, consider it photosynthesis. Four conditions are required. Four conditions. The first condition is sunlight. Second is chlorophyll. Third is raw material carbon dioxide, and fourth is a raw material water. These four things, only these two are raw material for photosynthesis. Remember it, there may be a question, what are the raw materials required for photosynthesis? So these two are raw materials for photosynthesis. These two, carbon dioxide and water. So let us see how they are going to get these four conditions, how the conditions are getting fulfilled so that they will perform photosynthesis. The very first one, sunlight. Let me draw a diagram also. Suppose this is a plant. This is a plant, and it has a huge sized, suppose this is a tree actually. This is a tree, and it has to get these all four conditions to perform photosynthesis. So what will be happen? Sunlight, sun is there, sun is there for lighting. So it provide sunlight to the plant. It is green in color, the leaves of the plants are green in color, and that is why they are being served, means the chlorophyll is there with them. So because of that only they have, their color is green, and that is chlorophyll. So this will be chlorophyll. So they are having chlorophyll in their leaves. So this is chlorophyll. In mesophyll cells actually the chlorophyll is present. Mesophyll cells are present in between. I need to draw a structure where we can understand it easily. Means I need to explain where the chloroplast present. So we need to draw the diagram of section of a leaf. This is epidermis. This is endodermis. This is endodermis. Somewhere in between these, the tissue
conducting tissues are present. The conducting tissues are there into it. And in between these, the mesophyll cells are present. Mesophyll cells. These mesophyll cells are present in between the upper membrane and lower membrane. There will be a space in between them also. So spaces are also, you can see, the cells are having full of spaces into it. The layer is called palisade layer, and the cells what I have drawn in green color is nothing but mesophyll cells, which are having the chlorophyll. So this is how I have been, means we have to fulfill this space also, but because of lacking of time, I don't want your wastage regarding with your time. So I'm not going to draw all this space also. Means whenever you are drawing this diagram, you have to cover this space also. So this is upper epidermis. This one is lower epidermis, this one. And at the upper epidermis, there will be a red colored layer I have made. This is called cuticle. Cuticle. Waterproofing is the main function of this cuticle. And this lower epidermis is having some pores at interval. These pores are stomata, which is used for the photosynthesis. And the conducting tissues are there. Along with this, some gaps are there, which is called air sacs or air chambers present in between, and that is why they are the spongy layer. This is also very spongy, and this is actually the site for photosynthesis. And this is very important for the board examination. If we go through this video, we really have some advantages for our board examination. So this is the site of photosynthesis. So this structure is found in each and every green plants, and this is a green plant. So it is having chlorophyll like this. Sunlight is striking over it. What is the another thing required? CO2. CO2 will be exchanged by the CO2, as it is having the stomata. Inside the stomata means opening is there by which exchange of gases can be done, and water will be taken by the root of the plant. So water will be conducted by xylem to the leaf. And leaf chloroplast is the actual site of photosynthesis. So we can write site of photosynthesis, that is chloroplast. Now I need to draw the reaction of photosynthesis. These all four conditions we have to remember. Reaction automatically can be drafted. The four things to be mentioned: sunlight, like just use first raw materials. This will be CO2 plus H2O, that gives, in presence of this complete procedure takes place in presence of sunlight and chlorophyll. So there will be sunlight. The second thing will be chlorophyll, and in presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide and water makes food for the plant. This is glucose, C6H12O6, and along with this water will be made. And the students, it's a time of World Cup. The World Cup is going on, so make balance this reaction, this complete reaction of photosynthesis. The Cricket World Cup is going on. Let us hit 3 sixes back to back. So these 3 sixes back to back, which balance, sorry, this will be CO2, this will be O2. These 3 sixes will balance, definitely will balance the reaction for sure. So these 6 molecules of water, 6 molecules of
carbon dioxide in presence of sunlight and chlorophyll, it will form glucose, and 6 molecule of oxygen will be also produced as a byproduct. So this oxygen will be utilized by all the animals. The animals in return will give CO2 as after the exhalation. Breathing out will be called exhalation, and exhalation gives carbon dioxide. So animals are giving carbon dioxide to the environment, and plants consuming this carbon dioxide and producing oxygen, which will be consumed by the animals. So this is all reaction, all about the photosynthesis. So this I am going to explain it Hindi also, so that the students will not face any more trouble of language or anything like that, and there will be a revision for them as well. Photosynthesis is a process by which green plants make their food, and this will be possible with help of these 4 conditions. So these are the 4 conditions. The 4 conditions are chlorophyll, sunlight, 2 raw materials like carbon dioxide and water, and then a reaction will be made. This is the reaction what we have made. I'm just showing you. ये 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के, ये दोनों मिलके और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। ये है आपका ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस के बाद। और फिर 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के भी रिलीज होते हैं, विच विल बी कंज्यूम्ड बाय द एनिमल, जो एनिमल से कंज्यूम होगा। अब एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जब बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को ये एक डायग्राम बनाना है। एक्चुअली इसे बनाने से पहले हम लोगों को एक लीफ भी बनाना चाहिए, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये लीफ के अंदर ही होता है। तो अगर आप चाहें तो एक लीफ भी बना सकते हैं। ये एक लीफ बना लिया, ये लीफ का पेटियोल हो गया, और ये मिडरिब है इसका, ठीक है। और इस तरह इस लीफ के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब इस लीफ को इसकी सेक्शन कटिंग करेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या है, जरा एक बार इसको देखते हैं। तो लीफ, अगर ये लीफ है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं लीव्स, मींस डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, और फ्लैट हो गए उसको डॉर्सोवेंट्रली स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये लीफ है, इस लीफ को ऐसे लिया और इसका सेक्शन ऐसे कट किया। तो जब ऐसे सेक्शन कट करेंगे तो जो हमें दिखाई देगा वो ये ब्लेड का जो ये थिकनेस है वो दिखाई देगा, वही है ये। तो ऊपर का जो है ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे एक एपिडर्मिस है, उसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक रेड कलर का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। एक्चुअली वो रेड होता नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है बस कि आपको डिफरेंशिएशन कर सकें आप। वो होता है क्यूटिकल, जो वाटरप्रूफिंग का काम करता है। इसके नीचे ये लोअर एपिडर्मिस है जो नीचे की तरफ है, नीचे वाले लिप ब्लेड पे, जिसमें स्टोमेटा भी होता है प्रॉपर इंटरवल पे। स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर ट्रांसपिरेशन, फॉर मेनी थिंग्स। तो स्टोमेटा भी होते हैं। इन दोनों के बीच में जो लेयर होता है उसको पैलिसेड लेयर कहते हैं, और ये पैलिसेड लेयर होता है ये मेसोफिल सेल से बना होता है। ये मेसोफिल सेल्स हैं, बीच में कंडक्टिव टिश्यू और भी टिश्यूज होते हैं पैकेजिंग के लिए। पर ये हमारा कंसर्न मेसोफिल सेल है। ये मेसोफिल सेल्स हैं जो थोड़े थोड़े बड़े बड़े और लॉन्गर स्ट्रक्चर में हैं, ग्रीन कलर के हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो ग्रीन कलर में अपीयर्ड होते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट एक ट्री में कैसे होता है, तो ट्री के पास ग्रीन लीफ होता है, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रीन लीफ क्या करता है, सनलाइट स्ट्राइक करता है इस पे, जहां क्लोरोफिल होता है उसको एब्सॉर्ब करता है। फिर CO2 एक्सचेंज होता है, इसके पास स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा से CO2 को ले लेता है एनवायरनमेंट से, और वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम से होते हुए लीफ तक पहुंच जाता है। और इस तरह प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो इस रिएक्शन में मैंने दिखाया है। इस रिएक्शन को देखिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये दोनों मिलते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। इस ऑक्सीजन को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। जब ब्रीदिंग करते हैं, तो जब एक्सहेलेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उसको प्लांट लेके फोटोसिंथेसिस करता है, और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन देता है, जिसको सभी एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। और इस तरह स्टूडेंट्स, हमने आज फोटोसिंथेसिस का ये सेशन कंप्लीट किया है। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। वी आर गोइंग टू अप्रोच to the next topic of your board examination, which is very important, and that is nutrition in plants.
So we will see. Keep on watching my YouTube channel, Ravi Sir Biology. Thank you.